आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अपर्णा तिवारी है एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पुणे। सो आप वरना पुणे से बड़ा लंबा सफ़र ट्रैवल करके लुधियाना आई हैं, मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। बहुत हिम्मत चाहिए इतनी दूर आके इंटर्नशिप करने के लिए। आपको यहाँ आके कैसा फील हुआ? एक्चुअली मेरी ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन थी इंटर्नशिप से, बस बट ये इंटर्नशिप उन एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ऊपर निकली एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट चूजिंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंटर्नशिप। आपका जो इंटर्नशिप का एक्सपेक्टेशन थी और जो आपको रियल में मिला, वो जो आप कह रही हो कि बहुत ज़्यादा मिला, वो क्या है ज़्यादा जो आपको मिला? सर, इंटर्नशिप में मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि ऐसे फाउंडर के साथ बैठ के डेली वी वुड बी हैविंग डिस्कशंस अबाउट द बुक, अबाउट द सोशल रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी, और वो भी सर हमारी बातों में पूरे प्रेजेंट रहते थे एंड इट वाज अ वेरी हम्बल एंड एनरिचिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। ये कितना इम्पोर्टेंट पॉइंट था कि डिस्कशन हो, क्लैरिफिकेशन हो। कई बार हम बात करते हैं कि हम बुक रीड कर रहे हैं, ऑथर के बारे में हम नहीं जानते होते। बुक इज़ ए रिफ्लेक्शन ऑफ द थॉट्स ऑफ द ऑथर। अब उसने कैसे बुक लिखी, क्या सोचा, अगर उसके बारे में हमें ज्ञान नहीं है तो मेरे को लगता है कि बुक का पढ़ना अधूरा हो जाता है। तो जो डिस्कशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब इस लेवल की बुक लिखी जाती है जिसको लिखने में 17 साल का वक्त लगा है, 17 साल की रिसर्च है, तो बहुत ही ज़रूरी है कि जो रीडर है उसके मन में उसी सोच के साथ बुक जाए जो ऑथर की सोच होती है। तो उसके लिए जो डिस्कशंस हैं दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपकी तो ये एक्सपेक्टेशन से बियॉन्ड हुआ, क्योंकि नॉर्मल ऐसा नहीं होता है। बट मेरे को लगता है कि इट वाज अवर नीड कि वी डिस्कस सो दैट कॉन्सेप्ट्स आर क्लियरली अंडरस्टूड बाय द रीडर्स। सो आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस बुक को रीड करने की कोशिश की है, क्लैरिफिकेशंस लेने की कोशिश की है। और ये बड़े लंबा रास्ता तय करने वाली बुक है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ book which can be finished in with one reading or two reading. It cannot be understood. It needs to be reread reread to properly understand the concepts and the ideology behind the book. आपको बुक का बेस्ट पार्ट क्या लगा? सर, ये कोई नॉर्मेटिव बुक नहीं, इट्स नॉट जस्ट नरेशन ऑफ फैक्ट्स और एनीथिंग। दिस बुक मेक्स यू क्वेश्चन, दिस बुक मेक्स यू पॉज एंड देन क्वेश्चन कि अभी क्या पढ़ा। एंड देन जब वो क्वेश्चन आएगा कि ये क्यों हो रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अगले का उसका आंसर मिलेगा कि ये इसलिए हो रहा है एंड दिस इज हाउ इट ओरिजिनेट्स, और उसके बाद आगे पता चलेगा कि हाउ टू सॉल्व इट एंड देन द अदर क्वेश्चन विल आंसर हाउ टू सॉल्व इट। तो ये इंटरलिंकिंग का पैटर्न और टू मेक द रीडर क्वेश्चन इज समथिंग रियली यूनिक अबाउट दिस बुक। ये जो बुक है रिस्टोरिंग द बैलेंस, ये एक बैलेंस की बात करते हैं और उसको रिस्टोर करने की बात करती है। इसका टाइटल रिस्टोरिंग द बैलेंस से आपको क्या समझ आता है? सर, रिस्टोरिंग द बैलेंस मेरे ख्याल से रेफर्स टू रिस्टोरिंग अ सोसाइटी विच इज जस्ट, जहाँ पे इक्वलिटी हो। मतलब ह्यूमंस आर इक्वल, ह्यूमंस वर नेचुरली इक्वल, बट समहाउ आज की सोसाइटी में दे आर नॉट। आज की सोसाइटी में वी सी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ। तो टू रिस्टोर दैट नेचुरलिस्टिक स्टेट इज समथिंग दैट आई कैन थिंक ऑफ रिस्टोरिंग द बैलेंस। आप मिस कर गए, आप हिस्टोरिकल पार्ट को मिस करके जो दिखाता था कि एक टाइम पे इक्वलिटी थी, फिर कैसे अनइक्वलिटी हुई, उस इक्वलिटी को रिस्टोर करने की बात कर रहे हैं। तो बुक में डिस्क्राइब किया हुआ है कि इक्वल टाइम डिस्क्राइब किया हुआ है, देन इनइक्वलिटी स्टार्टेड, है ना। तो उसको रिस्टोर करने की बात करता है, रिस्टोरिंग द बैलेंस टाइटल, कि हाउ टू रिस्टोर द सोसाइटी टू अ बैलेंस स्टेट वेयर एवरीवन हैज़ इक्वल राइट्स एंड equal इक्वल rights रिस्पेक्ट। and proper supply of resources so that everybody can
develop his or her talent according to the need, according to the talent they can develop themselves. अच्छा, तो आपको इसके इंटरलिंकिंग पार्ट बुक का बहुत अच्छा लगा। कॉन्सेप्ट वाइज बुक आपको कैसे लगी? So, concept wise, this book is not revolving just around economics or social realities. It also covers sociology, politics, administrative law, and being a student of law, this book also opened my eyes कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट्स दिए हैं बट प्रैक्टिकली वो राइट्स तो है नहीं, तो कहाँ पे लैक कर रही हैं चीज़ें। एंड ये सब इतनी सारी हॉलिस्टिक चीज़ें एक बुक में कवर करना इज समथिंग क्वाइट एडमायरेबल आई वुड से। जितने भी चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं बुक में, कितना क्लोज टू रियलिटी आपको लगे वो? सर इट इज़ डेफिनेटली क्लोज टू रियलिटी और दिस इज द रियलिटी आई वुड से। जो करंट प्रॉब्लम्स है हमारी, inequality, wealth inequality, exploitation of the common man by those in power, authority, the division of the society between rich and poor, increase in crime due to disparities, all those social problems that we are facing in the society today, do you think this book provides a solution for them? Yes, sir. This book not just only talks about the issues, but it also has practical steps कि हम कैसे रिफॉर्म ला सकते हैं इंस्टीट्यूट में, इन सारे इंस्टीट्यूशंस में, गवर्नमेंट के, डेमोक्रेसी में और एजुकेशन में। अच्छा, आपको इस बुक से कोई आपके माइंड में कोई बदलाव आया हो, कोई चेंज आया हो? डेफिनेटली सर, अगर इस बुक से पहले अगर मैं कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करती तो मैं बस उसे ऊपर ऊपर से देख के छोड़ देती, बट नाउ through the lens provided by this book, I could see the main reason behind it और हमें किसको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए उसके लिए, वहाँ पे किसकी इग्नोरेंस से वो कंट्रीब्यूट हुआ है। दिस बुक हैज़ प्रोवाइडेड मी डीपर लेंस, ब्रॉडर लेंस टू लुक एट सोशल प्रॉब्लम्स। रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, ये बुक उसकी सॉल्यूशन की बात करती है। यस सर, ये बुक उसके सॉल्यूशन की ही नहीं, ये बुक रिजर्वेशन के एग्जिस्टेंस को ही क्वेश्चन करती है कि दैट गवर्नमेंट इज ऑब्लिगेटेड टू मेक इक्वल अपॉर्चुनिटीज एंड इनफ अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीवन। बट जब सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज होंगी नहीं, इनफ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं होंगी सोसाइटी में, तब रिजर्वेशन की बात उठेगी। बट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन नीड्स टू बी क्वेश्चन इन इटसेल्फ। अच्छा, और कौन सी प्रॉब्लम है जो आपको लगा कि इस प्रॉब्लम ये बड़ी गंभीर है और इस बुक में इसका सलूशन है? सर, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा अभी, इट इज़ मोर ऑन थियोरी बेस्ड और unequal education is provided to children. This book talks about establishing equality इनिशियल लेवल पर ही, एजुकेशन लेवल पे, कि बच्चों को बचपन से ही सेम एजुकेशन, और अगर बच्चों का सिक्योर बचपन में ही, बच्चों का फ्यूचर बचपन में ही सिक्योर कर दिया जाएगा तो आगे जाके इट वोंट क्रिएट दैट मच इनइक्वालिटीज उनकी स्किल्स और कैपेबिलिटीज में। आपकी पर्सनल लाइफ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जहाँ पे दो यू आर वेरी वेल प्लेस्ड, योर फादर इज़ वेल इस्टेब्लिश्ड, योर फैमिली इज़ वेरी वेल इस्टेब्लिश्ड, फिर भी असमानता तो है, कोई लोग आपसे बहुत ऊपर हैं, बड़े बड़े रैंक अहदेदार हैं, उनके बच्चे हैं, कभी आपने किसी तरीके का इनइक्वल इनइक्वालिटी फील किया आपने? सर, सोशली और इकोनॉमिकली तो फील फेस नहीं करी बट फील ज़रूर करी है। मतलब अगर हम कार से कहीं जा रहे हैं और वहीं पे ट्रैफिक पे रुकते हुए जब सामने बच्चे भीख मांगने आते हैं तो उनको देख के कहीं ना कहीं तो वो फीलिंग आती ही है कि क्यों, ये है क्यों ये सिस्टम ऐसे। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो, कोई ऐसा बच्चा है जिसके फादर कोई मंत्री है, कोई बड़ा ब्यूरोक्रेट है या बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसको एक प्रेफरेंस मिल रही है आपके कंपैरिजन में? ऐसी इम्प्लाइड, आई वुड से इम्प्लाइड डिस्क्रिमिनेशन तो हर एक जगह होता है, जैसे मंदिरों में भी है वीआईपी लाइन अलग और नॉर्मल पब्लिक के लिए अलग। सो ये इम्प्लाइड डिस्क्रिमिनेशन तो हर एक जगह है आई वुड से। तो बुक क्या बात करती है टोटल इक्वलिटी की?
अब ये जो बताओ कि जैसे आपने बुक पढ़ी, एक तो आपके माइंड का पर्सपेक्टिव बदला कि आपने कहा कि मैं प्रॉब्लम्स को, अगर पहले मैं देखती प्रॉब्लम को ऊपर ऊपर से देखती, अब मैं उसके कॉजेज की तरफ भी जा सकती हूँ। अब कोई प्रॉब्लम ऐसी लाइफ में तुमने देखी जो इससे बुक से रिलेट कर सकती हो और उसका समाधान देख सकती हो? तो ये तो आउट ऑफ सिलेबस हो गया। आउट ऑफ सिलेबस कैसे हो गया? कभी कोई लाइफ में आपने ट्रेन में डिस्क्रिमिनेशन फेस की हो, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, एडमिशन में, पेरेंट्स की तरफ से, कहीं भी, किसी भी तरह की, फ्रेंड्स के डिस्क्रिमिनेशन, कुछ भी? सर, बीइंग अ गर्ल देयर इज ऑलवेज दिस जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, कि गर्ल की लाइफ इज मोर कंस्ट्रेंट एंड रिस्ट्रिक्टेड rather than to the absolute freedom given to boys. फ्रॉम द साइड ऑफ पेरेंट्स और फ्रॉम द साइड ऑफ Society. सोसाइटी? सोसाइटी तो बहुत चेंज हो रही है। अब तो वुमेन रिजर्वेशंस हैं, वुमेन्स आर बीइंग गिवन प्रेफरेंस, सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस अपॉइंट हो रहे हैं वुमेन, एवरीवेयर। जो ये, अगर बच्चों से ही इक्वलिटी का प्लेटफॉर्म बन जाए, फिर सारे बच्चे इक्वल ट्रीट होंगे, तो मेरे को लगता है कि उससे डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि बच्चों में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाए, चाहे लड़का है लड़की है। आपको लगता है? यस सर, अगर हम एजुकेशन ही इनिशियल लेवल पे सभी को सेम देंगे तो ये फीलिंग आएगी नहीं किसी में कि उसका फ्यूचर और उसकी लाइफ ज़्यादा कंस्ट्रेंट है। सभी एक दूसरे से इक्वल अपने आप को फील करेंगे, और अगर इनइक्वालिटी होती भी है तो दे विल हैव द एजुकेशन, द करेक्ट क्योंकि एजुकेशन पहला टू क्वेश्चन। पहला ज़माना क्या था, लड़कियां को घर संभालना होता था, लड़कों को काम करना होता था, वॉर करनी है तो लड़कों ने जाना होता था, लड़कियां घर में संभालती थी। तो सोसाइटी को बनाया इस तरीके से गया था, लड़कियों को एक रोल स्पेसिफिक दिया गया था, लड़कों का एक अलग रोल था। अब वो रोल्स चेंज हो रहे हैं। जब रोल्स चेंज हो रहे हैं, टाइम बदल रहे हैं, तो ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती। सोसाइटी को मॉडर्न वे में सर्वाइव करना है, तो मॉडर्न वे में सर्वाइव करने के लिए मॉडर्न सिस्टम की ज़रूरत है। तो मॉडर्न सिस्टम है कि फिर बच्चों से इक्वलिटी लेकर आओ, फिर लड़का लड़की का फ़र्क ही नहीं होना चाहिए। ऑल शुड बी ट्रीटेड एज ह्यूमन बींग्स, एंड एवरी ह्यूमन बींग हैज़ हिज ओन नीड्स। चाहे वो लड़का है चाहे लड़की है, उसकी फीलिंग्स हैं, उसकी नीड है, खाना सबको खाना है, बराबर का खाना है। तो अगर इक्वलिटी होगी तो खाना बराबर का मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज़ बराबर की मिलेंगी, तरक्की के रास्ते बराबर के मिलेंगे। अब इससे क्या होगा कि जो पुरानी सोसाइटी है, जो ऑलरेडी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जा रही है, अब उस ट्रांसफॉर्मेशन से सोसाइटी किस तरफ जा रही है, ये भी लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस तरीके से हम, क्या हम बिल्कुल ही इक्वलिटी के चक्कर में जो हमारा सोशल फैब्रिक है उसको ब्रेक कर दें? किस तरीके का इंटरेक्शन होगा, किस तरीके का कोऑर्डिनेशन होगा बिटवीन मेल एंड फीमेल? ये क्वेश्चंस भी सोसाइटी को डिसाइड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो अब हम देखते हैं कि मैट्रिमोनियल में डोरी एक्ट एक बहुत बड़ी अड़चन बढ़ता जा रहा है। कुछ लोग शादियां नहीं करा रहे इस डोरी एक्ट के चक्कर में, कुछ लोग सुसाइड पे जा रहे हैं, फैमिलियां ब्रेक हो रही हैं, बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है। तो लॉ को बदलने की बड़ी ज़रूरत है। तो ऐसे ही बहुत सारे और लॉज हैं जिससे सोसाइटी के अंदर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है, क्योंकि लॉ की एक फोर्स है। जब लॉ बन जाता है तो लोगों को मानना पड़ता है, जब मानना पड़ता है तो कल्चरल वैल्यूज़ में भी परिवर्तन आता है। तो अगर हम कोई भी सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो नई सोसाइटी कैसी होगी उसको डिफ़ाइन करना पड़ेगा। डिफ़ाइन ही नहीं करेंगे तो वो डायरेक्शनलेस सोसाइटी हो जाएगी, वो किसी भी डायरेक्शन में चली जाएगी। तो लोगों को बैठ के चिंतन करना बहुत ही ज़रूरी है, उसमें यूथ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। यूथ क्या सोचता है? तो इन सब बातों को जगाने के लिए इस बुक का कितना रोल है तुम्हारे हिसाब से? सर, एज आई सेड अर्लियर कि ये बुक बस प्रॉब्लम को ही डिस्कस नहीं करती, ये उसके सॉल्यूशंस को भी डिस्कस करती है। इफ if read carefully, this book is also providing a roadmap, I would say, not just for transformation but how to bring that transformation into reality. वरना आपने बुक पढ़ी, आपने डिस्कस भी की, ये आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली, हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स को जो आपने पढ़ा और एक लेवल, एक एंगल से समझा। जब हमने डिस्कशन की तो आपका एंगल बदल गया। तो नॉर्मली आप किसी को बुक दे दोगे कि रीड कर लो, तो उसके साथ भी ये प्रॉब्लम आएगी, है ना? तो इसको अंडरस्टैंड करना कितना इंपॉर्टेंट है।
अब आपने काफ़ी अंडरस्टैंड कर लिया और अभी काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंड करने की और ज़रूरत है, क्योंकि जो बुक 17 सालों में लिखी गई है वो 17 दिनों में अंडरस्टैंड नहीं हो नहीं। सकती। आपके अंदर कितनी की जिज्ञासा है, कितनी की क्यूरोसिटी है टू अंडरस्टैंड दिस बुक थॉरोली। So I'm really curious and I'm looking forward for more opportunities and more interactions with you. क्योंकि as you said कि author को जानना ज़रूरी है और author के ही reflection होते हैं book में. So this book ऐसा नहीं है कि इस बुक ने मेरे में कोई बदलाव नहीं लाया. This book has also made me more eager and more interested to learn about society as a whole. ज़्यादा. ओके, सो यू आर वन स्टूडेंट फ्रॉम साइम्बोसिस इंस्टीट्यूट। आपको क्या लगता है कि आपकी नॉलेज इतनी होगी, आपका कॉन्फिडेंस इतना हो गया कि आप बाकी बच्चों में इस बुक के मैसेज को स्प्रेड कर सको या उनके अंदर एक इंटरेस्ट क्रिएट कर सको? डू यू थिंक यू हैव बीन एबल टू बिल्ड दैट कैपेसिटी और स्टिल टू बी बिल्ड? So for some level, yes, there is always scope for improvement. You think there is a need for spreading the message of this book, the knowledge of this book? Yes, sir, definitely. Is it like an obligation on you, or is it like a need for you? Not just for me, it is a need for the society. Because everyone in the youth, they want transformation in the system, but they don't have the correct direction on how to work towards it. So this book gives Yes, the sir, this book directions. navigates towards the right direction. Okay. This book has many questions which are explained with the help of stories. Hmm. Any story which you like the best? So one of my favorite stories was that blue car Algeri. What is that? In that story, there is a blue car parked outside a person's home, and when his wife brings that topic that there is a blue car, he just act he just acts ignorance about it. Ki, oh, it might be something. It is not mine. That I know. And after a long time, he just realized that it was a gift from his father. So the same is the situation with our rights. They are there. We know they are present, but we are just not utilizing them. We are not acknowledging our rights, and बाद में फिर we are the one who are going to face the consequences of this ignorance. Hmm. So ignorance is one of the major reason for the problems in a democracy. Hmm. जैसे इस बुक में भी आपने पढ़ा होगा कि एग्जाम्पल दिया कि 5% पीपल आर होल्डिंग 95% वेल्थ, 95% are surviving on 5% resources. On the conversely, 95% people have 95% votes, 5% have only 5% votes. Hmm. Whereas democracy functions on the basis of majority. So how come 95% are poor? So that is where ignorance is the main problem. We are not we are ignorant about how to hold the government accountable. We don't know कि government को हम question कैसे कर सकते हैं, and कैसे तो छोड़िए, लोगों को यही नहीं पता कि गवर्नमेंट को क्वेश्चन कर सकते हैं वो. दे आर जस्ट लिविंग इन द सिस्टम एंड स्टक इन द सेम लूप ऑफ इग्नोरेंस, आई वुड So the government functions through the system of law. से. This book has reference that many of the laws are from the British era, and this book talks of repealing all those laws, replacing them with laws which are democratic friendly. Laws are made by the representative elected by people, MLAs, MPs. The connection between people who are electing them is only limited to the time of voting. After that, there is no connection. MPs, MLAs, they don't even discuss anything with them. Meeting them becomes a problem. So, how will we reform the law? How we will make the law democratic friendly if there is no interaction? So people should be more proactive in asking the government and asking their representative, okay, what are you doing for us? How will they become proactive when they are ignorant? Yes, sir, that's the main issue. They should have the right knowledge about their rights. So, this book talks about this issue, Hmm. talks about how ignorance is hampering the growth of large section of the society. Yes, sir. Why the large section of society is feeling second class citizen in this country?
So spreading awareness and ignorance is very important, but people who are getting advantage of the ignorance of others, many of them are in a position of authority and power. They will not take this initiative because they know if they take this initiative of spreading the knowledge, It would harm their it will interest. harm their interest. So, and the other side, public is ignorant. So they are not self-motivated. They are not aware so much that they need to acquire knowledge. They have left things on fate, not on system. Hmm. They don't question the system, rather they accept everything as a consequence of fate. So how we will change the mindset of the people? Because unless the mindset of people changes, vast majority of people becomes awakened. There will not be pressure on MPs and MLAs. Unless there is a pressure on them to change law, they will not change They the won't. laws. So what is the way out? So education and constitutional literacy. It There is a need to impart all this constitutional education in the children only. No, but problem is, Parna, people who are in authority, those who are responsible, those who are supposed to do this, they are not doing it. So, but people are the source of their power. So people need to question them. People need to They be have questioning they them. have no knowledge, no awareness. They need to be educated Who will about do it. that? That is the question. Who will do that? The aware section of the society, the educated section, they should They're be very the one limited. person. If the majority were aware, Hmm. by this time there would have been transformation already. We need to spread this message amongst all. There are very limited number of people, very limited number of people who are actually aware of the system. Hmm. I am surprised to see even many advocates are not conscious about the fundamental rights. Those who have studied law as a compulsory subject. So what we will expect from people in general. Yes, definitely. So those few limited number of awakened people, they have to work hard by sacrificing their own life, by sacrificing their own interest, or adopt this issue as their interest to change the society. If some such people come together, they make a collective force. Through that collective force, they can spread the message. They can actually transform the They can society. then. Transformation is possible. This book, I'm sure, has given you enough confidence that transformation is possible. Yes. Only thing, it needs to be catalyzed, it needs to be mobilized through a movement based on knowledge, Hmm. not on ignorance. If that is done by a few number of people also, the change, I believe, is possible. I'm sure you also believe that. Yes, sir. And so we need to work to bring a team together, and hopefully one day the India will be transformed. So in this transformation, what role you will play? So, being a student of law, I will have the actual opportunity to bring these dead words of law into lives. Like being an officer of the court, I will have the opportunity to make people tell people what their rights are and enforce their right into real life. See, being officer of the court is now a point to be questioned. These days, there are so many questions on the judgments by the Supreme Court, by the High Courts. They're doctored. Being an awakened citizen in the society, we can question them with through clarity of knowledge. We can actually question. Unless we change the present system, because the Hmm. system is the same, we will question them. There is no accountability. If they do not answer our question, what will we do? We are going talking to a system which is non-responsive, Hmm. and they are interconnected. They protect themselves. You have read this in the book. One organ of the state is protecting the other The organ of the other state, organ. because the survival in corrupt system lies in protecting each other. So if we question them, they will not answer. Unless public at large is awakened, the power of we the people of India is awakened. We the people of India realize that the supreme power lies with we the people of India. Yes, sir. And if that majority becomes awakened,
and that majority voice is raised, then the laws will be changed. Once the law is changed, then the system automatically follows the law. The system will change. So when the system will change, then people will start getting justice, equality, Yes, equal opportunities. Then people on the basis of talent will progress, not on the basis of parental status. wealth. Yes. How important role you visualize for yourself after reading this book in this society? As an awakened and educated section of the part of the society, I I do have an important role in bringing this transformation into reality. Matlab, when I have the correct knowledge, I can spread that correct knowledge through people. You have the conviction and confidence and desire, Then I will do it. and that is very important because if we are not self-committed, we will not do it. Yes, sir. This talk right now is a formal talk, maybe it's informal or formal, but it is institutionalized in a way. But when we think of at the individual level, then our consciousness guides us as to what we want to do, because this transformation can be a very big personal achievement also, because when we become part of a change and bring the change which helps large section of the society, automatically our level in the society is uplifted. Our respect, our honor receives a different degree of success and respect, both. So this itself, like, you take the example of some of the recent politicians, Kejriwal or Bhagwant Mann, they have been able to rise to the level of becoming the chief minister from nothing. When anybody raises public issues, you can get a very high status in the society by virtue of the work you do. And if the work really helps a large section of the society, your respect in the society will be uncomparable. So that itself is success. It's not in terms of money always. Jobs will give you a limited amount of money, but respect will give you unlimited amount of money. So it will be very good if you continue to remain connected with this book, makes it a mission to remove ignorance from the minds of people, replace that ignorance with correct knowledge. That will not only help the individuals, But the society but at the large. society and our country. When the society is good, then everybody's life is good. Hmm. If society is turmoil, everyone is in fear and suffers. So I'm very happy that you have shown very good interest, dedicatedly tried to read this book, raised questions during reading the book, and I expect you to continue to raise questions till the time every concept in the book becomes crystal clear to you. And one question I had asked you, the solution that is described in this book, I'd ask you to think about alternative solution. Have you been able to think? So I have reread the book again, but till now I am not able to find any alternative solution, because the solutions are the real solution, that is the step that is needed to take in. So still now, till now I am not able to think about an alternative. So that means we conclude that this is the solution. It is. So when we have the solution, then we just need to work for implementing it. Yes, sir. So we make a team to implement it. So all the best. Thank you very much. Thank you so much for the opportunity.